ओम श्री गणेशाय नमः। सभी भाई बहनों का आज की संध्या में, आज की इस बेला में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। We extend a very hearty welcome to all our brothers and sisters across the globe. Wherever you are, green morning, green afternoon, and green evening to everybody world over. Hope you're taking care of yourself, you're taking care of your family, your friends, your neighbors, your community, your society, your civilization, and all the people those are directly or indirectly in contact with you, and you're taking care of everyone. So, ladies and gentlemen, let's take on today's journey. Today is a very, very important topic we all are going to share, and that is going to be what is the importance of soft skills in entrepreneurship. Who is the entrepreneur? What is startup? How can you make best use of MSMEs? That means micro, small, and medium enterprise. And particularly, people are talking that post-pandemic, particularly after this coronavirus, there is a deep necessity of the soft skills. When we are talking about soft skills, yesterday we covered in education ecosystem. Today we will move ahead of education. That means you have acquired the skills and you are moving ahead now, and where basically we are taking into consideration you are interested to become entrepreneur, you are interested to become startup, you want to start your own business, you want to get into some kind of a outlet, because जो भी आपने एजुकेशन ली है, जो भी आपने स्किल ली है, उसके बाद आप इंटरेस्टेड हैं कि आप कोई काम धंधा शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू करें, तो वहां पर सॉफ्ट स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और सॉफ्ट स्किल्स की क्या जरूरत है। आइए इसी श्रृंखला में आज आगे चलते हैं और हम सब आज बात करेंगे इसकी कि what are the soft skills which are required to become an entrepreneur or in the business so called entrepreneurship. Today matters, you matter, this universe matter, your life matter, your skills matter, and your life, it has got a lot to give to this universe. So ladies and gentlemen, let's take on today's journey and let's get into the skills, and particularly let's talk about the soft skills which are required in entrepreneurship. Hearty welcome to all of you. Today is Thursday, 18th of November, 2021. And somewhere it's morning, somewhere it's afternoon, somewhere it's evening, wherever you are, we extend a very warm welcome to all of you. Now, there are some generic soft skills, there are some basic soft skills, and people those are joining us on the YouTube, we extend them a very warm welcome. आपसे कुछ देर के बाद मैं आपके नाम पढ़ूंगा, आपकी डिटेल्स पढ़ूंगा, आपके कमेंट्स को भी पढ़ूंगा. Let me just take on initially to set the context today. What is the importance of soft skills to become entrepreneur or into entrepreneurship avenues, ventures, and outcomes? Your clear communication, your listening skills, your self-control, your positive attitude, your assertiveness, your teamwork, your conflict resolutions, empathy, and of course, deeper when you talk about that is deeper solemnization, taking responsibility, a sense of humor, and finally cooperation. No competition, cooperation. That means we all got to cooperate with each other. Let's move ahead in a collaborative manner. On behalf of our chamber ICSI, we extend a very warm welcome to all of you, ladies and gentlemen. What a pleasure to have you, everyone, on this particular platform for today's deliberations, interaction. Who is entrepreneur? And what is entrepreneurship? I'm not going to get into all the details, but entrepreneur is a person who designs, who launches, and puts into operation a business. And that is starting from an innovation. Some idea comes to your mind, that idea you implement, and after that, you take on the journey forward.
There are million thinkers on this planet. लोग सोचते हैं, creative सोचते हैं, dynamic सोचते हैं, vibrant सोचते हैं. They have got lots of ideas, plenty of ideas. But idea ही रह जाएगा यदि आप उसको execute नहीं करते हैं. So there are million of ideas in this universe, on this planet called Earth. But the important thing is execution of those ideas. And that's based on your talent, your training, your aptitude. So, ladies and gentlemen, to think is easy, but to act is hard. You want to get up in the morning at 5 o'clock, you want to go for a jog, you want to go for a run, you want to go for a sprint. It's very nice to think that and very easy to think that before you sleep. But the most important thing is next morning, you have to get up at 5 o'clock. Your body would say, your mind would tell, come on, let's go to sleep. Why to get up? It's too early. It's winters. It's foggy. Sun has not come up. Whole world is sleeping. Why not you should also sleep? Are you turning mad to get up? That kind of a jolting will come. But you previous night before you slept, you thought that you're going to get up at 5 o'clock. So get up. But the hardest thing in the world is to act in accordance with your thought process, with your thinking, with your ideas. So thereby, all ladies and gentlemen who meet me, I always tell them, you have got wonderful ideas. You've got beautiful ideas. You have got $1 million idea. But that idea will remain idea only if you don't implement. So let's step out. Let's move ahead. Become entrepreneur. Become startup. Whatsoever is your innovation, turn that into action. Now, what exactly is soft skills? What are soft skills? Why do we say all the time soft skills? What exactly is that? The soft skills are those skills, those habits, and those behavioral patterns that distinguish us as a professional, and that makes the difference when undertaking any project, solving a conflict, and relating to others. That means, first of all, let's get focused. What do you want to do? Utilize your common sense. See the situation all around. Be very aware. Be enthusiastic. Be optimistic. Always carry empathy in your mind, in your heart, in your vision for others. Be confident. Manage your time very well. And remember, self-management is one of the most important skills on this planet. Friendliness and beautiful manners. And finally, you got to have ambition that I have to do something in my life. I don't want my life to be wasted. And why soft skills are so important for entrepreneurship? Being an entrepreneur, ladies and gentlemen, it's a little bit different than being a business owner. Because somebody who is thinking only from a profit point of view is basically a businessman, a business ownership. But a person who is looking forward to being an entrepreneur, innovative entrepreneur, creative entrepreneur, futuristic entrepreneur, you've got to keep the customer in your mind. Not only customer care, not only customer service, but amaze the customer. You got to, customer is not thinking that you're going to give that service as well. And your skills, and particularly your soft skills, are going to make lots of difference in that. You got to pick up those skills. So being an entrepreneur is a little bit different from just a pure businessman. You want to work with your customers and your clients. You want to show them that this is not just a professional relationship, but it is beyond that. It is ahead of that. You want to build on your product and all your services. You do not want to enforce them to people. You want that they should enjoy your service and your deeds, whatever good you're doing for society. You want your customers to see you, not your product. They should feel you as an individual, as your service, as your innovative service. You have to communicate with them. You have to connect with them.
You have to connect heart to heart, soul to soul, mind to mind, spirit to spirit. And you have to make them feel very comfortable and very familiar with what you have got to offer. उन्हें पता होना चाहिए कि आप किस चीज की सर्विस देते हैं और किस चीज में आप एक्सेल करते हैं. I always honor and I always remember in my mind the Prince of UAE, United Arab Emirates. दुबई में वो ये कहते हैं, ऐसी बिल्डिंग बनाओ जैसी आज तक किसी ने ना बनाई हो, और ऐसी बिल्डिंग बनाओ कि आगे कोई बनाने की कोशिश करे तो उससे बढ़िया बिल्डिंग ना बन पाए. You should excel. That should be your USP, unique selling proposition. Every young entrepreneur, you should keep it in mind and you should pursue your dreams. You should be daring. You should be planning. You should be preparing and bouncing back. Failures will come, difficulties will come. हमेशा जीवन में वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं, लेकिन आप परिस्थितियों को और स्थितियों को बदल सकते हैं. You have to work out accordingly. Zero concern stress. Stress is the biggest killer on this planet. मेरे साथ YouTube पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं. अपने व्यूज डालते जाइए. मैं थोड़ी देर के बाद आप सबको अपना आभार भी प्रकट करूंगा और मैं आपके नाम भी रीड आउट करूंगा, because I'm grateful to all the people those are joining us. Now, learning from experiences, whether your own experiences or others' experiences, but learn. Be a leader, not a boss. I always believe when I work with others that I'm not a boss. I'm not even a leader. I don't want to be a leader. I want to be colleague. I want the team to be having homogeneous relations, not heterogeneous relations. We all should prosper, grow, move ahead together. The important thing is not in what competencies you have, but in the combination of them. आपकी अकेले की जो स्किल है, जो योग्यता है, जो कौशलता है, वो उतना महत्व नहीं रखती जितना आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं और आपके टीम के लोग भी आपके साथ जुड़कर आपको अपना पूरा योगदान देते हैं. Now, who is a good leader? As a leader, you got to take initiative. नेतृत्व करने के लिए खूबसूरत चेहरा जरूरी नहीं है. जरूरत है तो वह एक बुलंद आवाज, आगाज, अंदाज और अंजाम की तरफ को. अंजाम गुलस्तां पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा. चलो तो सही एक बार इस पगडंडी पर शुरू तो कीजिए अपनी जर्नी को. एंड यू गॉट टू हैव ऑलवेज ए पॉजिटिव माइंडसेट. बी काम, बी पॉजिटिव, बी कंपोज्ड, ऑलवेज बी क्रिएटिव, always be innovative, always think what good you can do. And you know, ladies and gentlemen, they say there is no price tag to peace of mind. Try and get peace of mind. That is something very important. बड़ी मुश्किल से मिलता है peace of mind. और जिनको peace of mind मिलता है वो अच्छे से रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, खुशनुमा होते हैं, औरों को भी अपनी खुशबू देते हैं, औरों में भी खुशी फैलाते हैं. अब देखिए सामने एक गिलास है, इसको आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं. आपने साथ में फुटा, स्केल, कुछ भी आप कह सकते हैं रखा है. अब कुछ लोग कहेंगे ये हाफ फुल है, कुछ कहेंगे ये हाफ एम्प्टी है. जो कहेंगे हाफ फुल है उनको ऊपर का खाली हिस्सा दिखाई दे रहा है. जो कहेंगे हाफ एम्प्टी है उनको भी नीचे भरा हुआ पानी या जो भी चीज इसमें है वो दिखाई दे रही है, ऊपर का हिस्सा उन्हें खाली दिख रहा है. और जो लोग पॉजिटिव हैं वो ये कहेंगे गिलास पूरा भरा हुआ है, नीचे पानी है, ऊपर ऑक्सीजन है, सब कुछ है, और वो भी हिस्सा भरा हुआ है क्योंकि इस ग्लास का जो आकार है, जो चित्रकार ने बनाया है वो इस तरीके का बनाया है. और जो इसमें आधा पानी है, ऊपर आधी वायु है, हवा है. That also you got to say, see, and you have to have a positive mindset. And ladies and gentlemen, most important skill on this planet in the 21st century, post pandemic, मैं सबको एक ही बात कहूंगा, सबसे important skill इस planet पे है your communication skill, your connecting skill. जीवन एक स्टोरी है. आपको याद होगा बचपन में हम दादा दादी की कहानियां सुनते थे, नाना नानी की कहानियां सुनते थे, चंदा मामा आता था,
उसके अलावा चंपक आता था और उसमें अलग अलग तरीके के कार्टून्स होते थे। उन कहानियों को सुनते सुनते आप रात्रि की निद्रा में चले जाते थे, क्योंकि जीवन एक स्टेज है। जीवन में कहानियां ही सब कुछ है। जीवन भी तो एक कहानी है। जिसने इस जीवन को रचा है वो भी इस सब चीज को एक कहानी के रूप में, इंसान दुनिया में आता है, कर्म करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, जॉब करता है, दूसरों के साथ जुड़ता है, हंसी खुशी आगे चलता है, मुस्कुराहटें बस बिखेरता है और प्रयास करता है कि औरों को खुश कैसे रखा जाए। मैं अगर राज कपूर जी की जिंदगी के अंदर उतर कर देखूं तो शायद उनसे अच्छा फिलोसोफर, उनसे अच्छा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर, और मैं यहां तक कहूंगा कि संगीत का उन्हें कितना ज्ञान था। हर एक गाने की सिचुएशन को समझना और फिर कलाकार से वैसा ही गाना गवाना और म्यूजिशियंस को वैसी ही ट्यून बताना। और शैलेंद्र जी ने जितने उनके गीत लिखे, उन गीतों का आप जरा थोड़ा सा संरचना को देखिए कि उन गीतों का जीवन की फिलॉसफी के साथ कितना ज्यादा सहयोग है और वो आपके जीवन के अंदर जुड़े हुए हैं। आप संसार में क्यों हैं, आप संसार में क्या कर रहे हैं, आप संसार में क्या कर सकते हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको इस संसार में कौन सी खुशबू छोड़कर जाना है, और खाली ये जीवन व्यर्थ ना हो जाए और आप यहां से चले जाएं और आप you do not add any value to the universe or to the society or to the community or to the universe civilization, so what is the use of your coming to this world? I personally feel अपने इस जीवन को तपाना होगा। एक जीवन संघर्ष है, जीवन एक तपस्या है, जीवन एक यात्रा है। इसको उस पगडंडी पर लेकर चले, उस रास्ते पर लेकर चले जिसमें औरों के जीवन में हम खुशियां दे सकें, उन्हें प्रसन्न कर सकें, उन्हें हैप्पी कर सकें, उन्हें अच्छा रख सकें, उन्हें मुस्कुराहट दे सकें। दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी ऑल हैव टू लर्न। एज ए एंटरप्रेन्योर हमेशा ये सोचिए कि चाहे आपका प्रॉफिट कम हो, लेकिन समाज को कितना फायदा हो रहा है यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। आप किसी पर आश्रित नहीं है, आप सरकार पर आश्रित नहीं है, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री करके नौकरी के लिए भटक नहीं रहे हैं, आप इधर उधर टक्कर नहीं मार रहे हैं और आप सिर पटक के कहें कि किसी तरीके से सरकार की नौकरी मिल जाए ताकि मुझे काम ना करना पड़े। मेरा ख्याल इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं है जो इंसान ये सोचता है कि मुझे ऐसा काम मिल जाए और सरकारी काम मिल जाए कि जहां मुझे काम ना करना पड़े। आई थिंक देश कैसे तरक्की करेगा, समाज कैसे तरक्की करेगा, संसार में, सोसाइटी में सब यात्रा आगे की कैसे होगी अगर सभी ये सोचने लग जाएं। अब जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, आप बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप दीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल दीजिए, आप उनको स्टार्टअप की स्किल दीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 29 जुलाई पिछले साल दी गई है, उस नई एजुकेशन पॉलिसी में 6th क्लास ऑनवर्ड आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की सभी बीज को खेत के अंदर डाल दिया जाएगा। When you will start learning coding, you will have 10 days backless, travel to school. You will go to corporate houses, you will go to factories, you will go to different institutions. और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर क्वालिटी नहीं रह गई अब कि ये को करिकुलर है, ये तो गाते अच्छा है, ये डांस अच्छा है। ये सब कुछ शिक्षा का एक स्वामेश, सारी चीजों की सामग्री को इकट्ठा कर दिया गया। जैसे हवन कुंड में सामग्री डालकर वातावरण को शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इस एजुकेशन के माध्यम से भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और भारत पुनः उस यात्रा पर चल पड़ा है, निकल पड़ा है। जब हम नेटवर्किंग की बातचीत करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेक्नोलॉजी को भी यूज करना है, आपको टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, आपको टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से आगे लेकर चलना है, एंड नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे जितने भी लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, इट्स बेसिकली नेटवर्किंग, क्योंकि हम सब लोग नेटवर्क कर रहे हैं, हम सब लोग इकट्ठे प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के बाद इस वीडियो को, आज के कार्यक्रम को मैक्सिमम शेयर कीजिए। जो लोग आज के कार्यक्रम में नहीं आ पाए, जो कमेंट्स नहीं डाल पाए,
डाल पाए, और जो आपके संपर्क में है, आपके साथ फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, कहीं भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ आज का कार्यक्रम शेयर कीजिए। दैट इज ऑल्सो नेटवर्किंग। आइए, मैं यूट्यूब पर जो लोग आज जुड़े हैं उन सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा और उन्हें धन्यवाद करना चाहूंगा। I would be grateful to all of them, those who have joined us this evening. Balkrishnan ji, Om Namo Shivaya, hearty welcome to you. Thank you very much. Pandit ji, you are great. Thank you very much for joining us. Julie Subba ma'am, hearty welcome. Deepa Hazarika ji, hearty welcome. Jay Subba Lakshmi ji, hearty welcome. Habang ma'am, hearty welcome. BB Subba Foundation, hearty welcome. Sakshi ji, hearty welcome. Asfosa, thank you very much for joining us. उसके बाद हमारे इन्फो स्टूडेंट्स, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. डॉली बरुआ, that is from Tinsukia and other places, a hearty welcome to you. Senior consultants from Delhi, hearty welcome. Ishita Shukla from Lucknow, hearty welcome. Pankaj Tripathi ji from Agra, hearty welcome. Manisha Chaturvedi, that is from Uttar Pradesh, hearty welcome. Nisha Agrawal ji, pleasure to have you with us. Nishank Maurya ji, hearty welcome. Nanlai, hearty welcome. Mamta ji, hearty welcome. Sakshi ji likh rahi hain, success depends on employees. For me, knowing and connecting with my employees is very, very important. So true. Mamta ji, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you're doing, you will be successful. Not only that, you will never get tired if you are doing what you enjoy. That is something very, very important. Balkrishnan ji, leadership is that kind of approach where acts of a single person inspires and encourages others to follow the same. So well. Mamta ji, communication. The human connection is the key to personal and career success. So true. ये सभी लोग YouTube पर जो लिख रहे हैं, पंडित जी thank you. पूजा माखिन, she is from Ambala, मैनेजमेंट की टीचर हैं और बहुत ही डायनेमिक और डेडिकेटेड हैं. इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है. हमारे साथ साक्षी जी लिख रही हैं देहरादून से, टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टूल in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is most important. Yes, I totally agree. Deepa Hazarika, thank you for joining us. Mohammed Habib, Achwaba, hearty welcome. And it's a great, great pleasure to have you with us. And Laishram Damini ji, thank you very much for joining from Manipur. Mamta ji, empowering session. Thank you. It's empowering because you are the part of it. और जितने भी लोग हमारे साथ YouTube पर जुड़ रहे हैं, इन सब का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे. The wonderful people, they spare their time, they come for the program. और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंटली प्रोग्राम को देखते हैं लेकिन व्यूज नहीं डालते हैं. आनंद मुखर्जी, हार्टी वेलकम. एंड जितने भी और लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है. तो आइए, नेटवर्किंग के माध्यम से हम एंटरप्रेन्योरशिप में आगे चलते हैं. नेगोशिएशन, यू गॉट टू बिलीव. हाउ डू यू नेगोशिएट, हाउ डू यू कैरी द विजन फॉरवर्ड. और देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंसान टाइम को ठीक से मैनेज करता है, बहुत अच्छा है. अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो टाइम आपको मैनेज कर देगा. कल के लिए अच्छी तैयारी यही है कि आज कुछ अच्छा करो. टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन. क्रिएटिविटी, इनोवेशन, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कोलैबोरेशन, इट्स अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Adaptability, flexibility, that is something very important. Emotional intelligence, yes, emotional intelligence. When you talk about your empathetic response, your mood regulation, your interpersonal skills, your internal motivation, your self awareness. एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, जेंडर का कोई क्राइटेरिया नहीं. यू बॉय है, गर्ल है, मैरिड है, अनमैरिड है, यंग है, मिडिल एज है, एल्डरली है, डजंट मेक ए डिफरेंस एट ऑल. जिस दिन आपके अंदर क्षमा जल गई, जिस दिन उस क्षमा की लौ दिखाई थी, उस दिन आप जीवन में कुछ कर जाएंगे. दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लर्निंग
एंड यूज ऑफ नॉलेज। हम कहते हैं ना, नेवर स्टॉप लर्निंग। एन को हटा दीजिए, एवर हो गया। स्टॉप में से एस को हटा दीजिए, टॉप हो गया। एवर टॉप लर्निंग। हमेशा अच्छा सीखिए, औरों से सीखिए, जिससे जो कुछ सीख सकते हैं सीखिए। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। I learn so much from all of you, and I'm grateful to all of you for that. Now, ladies and gentlemen, what is strategic orientation? Orientation क्या चीज होती है, और स्ट्रेटेजिकली ओरिएंटेशन की तरफ को हम कैसे जाते हैं? नाउ, जो एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेशन है, जो मार्केट की ओरिएंटेशन है, या कुछ भी सीखने की ओरिएंटेशन है, वो सब चीजों के मिश्रण से डिपेंड करता है कि आपकी जो एंटरप्रेन्योर की फर्म है, जो आपकी कंपनी है, जो आपका सेटअप है, जो आपका काम धंधा है, वहां पर परफॉर्मेंस कैसी होगी। एंड ऑलवेज दे से कि जो एंटरप्रेन्योर की ओरिएंटेशन है, उसके साथ सस्टेनेबल की ओरिएंटेशन को अगर हम लेकर चलें, तो योर इनोवेटिवनेस, योर प्रोएक्टिवनेस एंड योर रिस्क टेकिंग, जो रिस्क टेक करने का मादा है, इन सब चीजों को अगर मैं लेकर चलूं, तो सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेशन, आज हम उस स्थिति में उस तरफ को चल रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग, और क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स करेज rather than इंटेलिजेंस। अगर करेज है, अगर आपके अंदर हौसला है, तो आप कहीं भी चले जाएंगे। एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम क्या है, एनालाइज कीजिए और सोल्यूशन ढूंढिए। दैट इज कॉल्ड एनालिटिक। एक्टिव लिसनिंग, किसी के साथ भी बातचीत करते हैं, उसे ध्यान से सुनिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। इफ यू आर ए एक्टिव लिसनर, यू हैव डन हाफ द बैटल, यू हैव वन हाफ द बैटल। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम हियर से कर रहे हैं, या हम लिसन कर रहे हैं, या मनन कर रहे हैं, या समझ रहे हैं कि आगे वाला क्या कहना चाहता है। बी अटेंटिव, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन एंड पैराफ्रेज, बी अट्यून टू एंड रिफ्लेक्ट फीलिंग्स, और समराइज कर दीजिए जो कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? रिमूविंग ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, लिसनिंग टू स्पीकर्स, वेरी केयरफुली कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, फीडिंग बैक दैट यू हैव अंडरस्टूड, और उनको ये महसूस करवाना कि आपको समझ आ रहा है। नाउ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन इन आवर लाइफ। जो इंसान डिसिप्लिन्ड है ना, they can do wonderful. Successful entrepreneurship में एक तो स्पिरिट चाहिए और एक स्किल चाहिए। जो स्पिरिट जो है वो ऑफ पायरेट, एंड जो स्किल है वो नेवी सील। That means you should be disciplined, and entrepreneurship is something beautiful. Transparency with yourself and with others. Facing discomfort, problems आएंगी, difficulties आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, बट बी कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, इंटेग्रिटी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You got to be carrying self integrity. Now what are the future soft skills in entrepreneurship? एक तो सबसे पहले स्किल का ग्रुप क्या है, आज की स्किल्स क्या है, और फ्यूचर में क्या स्किल्स होने जा रही हैं या जिनकी जरूरत पड़ेगी। तो इंट्रा एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, जब इंटरपर्सनल होता है और इंट्रापर्सनल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को, अपने आइडियाज को हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, उनको अगर आज के स्वरूप में देखें कि आज की स्किल्स क्या है, तो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है? माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कम्युनिकेशन स्किल में क्या है? बिजनेस स्टोरी टेलिंग इन द फ्यूचर, नेगोशिएटिंग नेटवर्क्स, क्राउड्स एंड मूवमेंट्स। सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होंगी? फ्यूचर में क्या होगा? वर्किंग विद नेटवर्क्स, क्राउड्स एंड मूवमेंट्स, एम्पैथी एंड कंपैशन, इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस एंड इन्फ्लुएंस। अब फ्यूचर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या स्किल्स होंगी, और पर्टिकुलरली सॉफ्ट स्किल की जब हम बातचीत कर रहे हैं, सो क्रिएट एंड सॉल्व द स्किल्स। आज की स्किल में क्या आएगा?
टुडे जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड मैनेजमेंट. फ्यूचर में क्या होगा? adaptive planning and management and time management. It has to be amplified, it has to be discussed in detail. किसी दिन टाइम मैनेजमेंट का अलग से भी एक कार्यक्रम करेंगे. हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये टुडे की स्किल है. फ्यूचर में क्या होगा? सिस्टम थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल दिस इज गोइंग टू बी देयर. अब क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या है आज? और जब हम फ्यूचर में कहते हैं तो को डिजाइन. Now teachers, you are also to joining with the youth, and we all are the co-learners. So co-designing, co-creativity and co-innovation, that all is going to be very, very important. Now, what are the future soft skills in entrepreneurship? When we talk about it, we have to take into considerations what all we can do. So information, opportunity and risk management skills. इसमें क्या क्या है? आज की डेट में अपॉर्चुनिटी सीकिंग, रिकॉग्निशन एंड असेसमेंट. फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर की क्या स्किल्स चाहिए होंगी? बिल्डिंग एंड मैनेजिंग ऑनलाइन रेपुटेशन. नंबर 2, आज इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड मैनेजमेंट. फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एम्प्लीफाइड. तीसरा, कोपिंग विद एम्बिग्यूटी. कोई भी किसी तरीके का कहीं पर शक शुबा नहीं होना चाहिए. कोपिंग विद एम्बिग्यूटी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, ये आज की डेट में है. फ्यूचर में यू विल बी मैनेजिंग वेलनेस एंड पर्टिकुलरली यू विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि वेलनेस को अच्छा और कैसे करें. योर पॉजिटिव थिंकिंग, योर पॉजिटिव एनवायरनमेंट, योर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. आपको दो वक्त के भोजन के लिए भी प्लान करना है कि मुझे किस तरीके का स्टार्टअप और मुझे किस तरह का कार्यक्रम करना है ताकि मैं औरों के लिए भी रोजगार क्रिएट कर सकूं. अब फ्यूचर की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और ग्रोथ माइंडसेट की स्किल्स क्या है? अगर आज की दृष्टि से देखें तो परसिस्टेंस, टेंसिटी एंड देन रेजिलियंस. और अगर फ्यूचर में देखें तो ग्रिट. और टुडे की स्किल देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. फ्यूचर में क्या स्किल की रिक्वायरमेंट? एजिलिटी. अभी आज टुडे स्किल क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेशन. और फ्यूचर स्किल क्या है? एक्टिव लर्निंग स्किल्स, मोटिवेशन टू कंटिन्यूअसली लर्न. दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And what are the characteristics necessary for entrepreneurship at the classroom? Now, these are very, very important points. Ability to take responsibility and to be ready with constant learning. Management and planning skills to lead and implement a project from scratch. Ability to adapt, to change and solve problems in order to carry out the necessary actions in the event of unforeseen events which is happening. Emotional control, self-control, self-esteem and self-criticism. मुझे पता होना चाहिए कि मेरी क्या कमी है, मुझे कहाँ इंप्रूव करना है और मैं क्या अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ. उन सब चीजों को, भावनाओं में खाली नहीं बह जाना है. Think creatively and take risks. Have initiative and interest in innovation. That is something very important. Know how to transmit ideas and lead groups. Thank to a great communication or communicative capacity. So ladies and gentlemen, education, skills, both are incomplete till the time we arrange some kind of a job, some kind of a startup, some kind of entrepreneurship, some kind of self-employment, some kind of venture which has to come up if we want the education changes. And then strategy for services exports. Every day we tell you that the world over the population is aging. Indian youth can do wonders on this particular planet. And there are so many ideas which can be taken up for services strategy. We are thankful to Media Entertainment Sector Skill Council for doing more than 100 webinars with us. And today, ladies and gentlemen, media entertainment industry, when I talk about, let's take and focus only on entertainment. There is a huge chunk of the younger population and teachers. They all are very keen because entertainment is going to play a very important role for all of us. Thereafter, ladies and gentlemen, Wellness Sector Skill Council.
Then we have got management and entrepreneurship and professional skill council. And finally, whatsoever human mind can conceive and believe, it can achieve. You can also achieve. You can also come forward and you can fulfill your dreams. This is your YouTube channel, GS Motivator. Like it, share it, subscribe it, and share maximum. And you can post your comments on the YouTube, this particular channel. And now, tomorrow evening at 5:30, we will take you to Canada. We'll talk latest on education in Canada, what all is happening in Canada, and what are the challenges. But this all will be through the lens of Mr. Vijay Shastri Kotamartiji, who will be joining us live tomorrow evening, Indian Standard Time, 5:30. And that is power of self. And tomorrow we'll focus on power of listening. And tomorrow night, ladies and gentlemen, India's startups and women entrepreneurs and pitfalls to prepare for. That is going to be Vaniji, who is going to discuss as a managing partner, transnational training solution content. And that we are going to discuss tomorrow evening with all of you. So ladies and gentlemen, with these words, try and become entrepreneur, try and become self-employed, try and start some startup at your own and go through all the perks, all the privileges, all the training programs, all the skill program, all the financial support, whatever government is ready to give it to you, try and make optimum use of that, because it would help you a lot and lot and lot. I'm also grateful the people those have joined us additional right now. We would be so grateful. Rosie Chakma is writing, skills is a preparedness without education for our future destination. Mamta ji, count your blessings, focus on what you have got, and don't worry about what you don't have. Spread the positive vibes. Yes. And Rosie Chakma ma'am from Tripura, hearty welcome. Amazing session. Thank you. Balkishan ji, yes, we want programs on time management as well. We will certainly bring one of these days next week sometime for you. Kim Kipgen, positiveness is the key to overcome any situation. Thereafter, we have got Amisha, who is joining us, great enthusiasm. And then Amisha, you have again written, rightly said, sir. And then comes Prachi Kalita, Amisha, all these, Rishi Mohan, and Rahul Budo, and Pooja Makhan, thank you, ma'am. Rahul Budo, hearty welcome. You are wonderful, excellent person. Amisha, a great sir. I appreciate. Thank you. Julie, ma'am. Nothing is impossible in our life. Nothing is good or bad, but thinking makes it. How do you think? That's what Julie, ma'am. So true. Tyrone G, coming all the way from Tura, the Garo Hills, which is there in the beautiful state of Meghalaya. Ladies and gentlemen, we all will travel to Meghalaya soon. Every Saturday, we are bringing at 8 p.m. right at this time a program with Mr. Tyrone D. Pras. He's our advisor for education for the Northeast India. Balkishan ji, thank you very much. Pandit ji, thank you very much. Amisha ji, thank you very much. And may God bless all of us. Thanks for joining us today. Thanks for being a part of this program. Look forward to meeting you tomorrow from the soil of Canada at 5:30 p.m. Indian Standard Time. And thereafter, we will have 8 p.m. That is the Women Empowerment, tomorrow being Friday. So look forward to meeting you tomorrow for two programs, 5:30 and 8 p.m. Thank you. Dhanyavad. Shubh Ratri. Green morning, green afternoon, green evening to all our brothers and sisters across the globe. You all are amazing, and we will be meeting tomorrow evening